comments. Okay. So, Aiman, are you ready to discuss the ethics paper of Pramod? Yes, sir, I am. In fact, Pramod has also joined the Okay. meeting now. You can Sir, okay. I You am. can take important questions and important comments. Okay. Sure, sir. Sure, sir. Sir, I have joined the meeting through phone. So, if someone else can share the screen for Okay. this test, latest test, the test number 21 of Pramod. Okay. Pramod, can you share your screen? ठीक है. हाँ, ठीक है. सर, एक चीज जो मुझे प्रमोद के आंसर्स में लास्ट टाइम भी दिखी थी और इस टाइम भी दिखी कि जो थ्योरी के क्वेश्चंस है उसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मिसिंग है. ऑल्दो कंटेंट अच्छा है बट प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मिसिंग है. इस वजह से वो पेजेस भी फिल नहीं हो पा रहे. अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो एक डेढ़ पेज ऐसे फिल हो रहा है. लाइक अगर दे आर आस्किंग differentiate between these two, empathy and compassion, so you should have at least 2-3 lines of introduction and 2-3 lines of conclusion instead of just making a table initially only. So this is one thing that I wanted to tell him. इस वजह से मैंने उनको ये मीटिंग भी ज्वाइन करने को बोला कि प्लीज आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखिए, even if it is a differentiation का question. But what I am struggling to write the means number of words, ma'am. I don't know exactly the reason, but I am not able to write many words because it is the same thing issue happening for the last 4 means whatever I am writing. I am not able to write more number of words. What is the reason I am not getting? It is Okay, very जैसे slow. एक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, जो कि पूछ रहा है कि ethical competence of civil servants goes beyond complying with the law and extends to satisfying the individual conscience. तो इसमें आपने सबसे पहले जो लाइन लिखी है वो ये लिखी है कि ethical competence of civil servants goes beyond compliance with the law due to following reasons. इसको आपने बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया. व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, आप एथिकल कॉम्पिटेंस को एक्सप्लेन कर सकते थे. why ethical competence is needed in the life of civil servant, आप ये भी लिख सकते थे. why it goes beyond with the law, you just started answering the body of the answer instead of going for the introduction. और उसके बाद आप अब्रप्टली खत्म कर दे रहे हैं, आप कंक्लूड भी नहीं कर रहे हैं. इस वजह से वो पेजेस भी फिल नहीं हो रहे हैं और आप नंबर ऑफ वर्ड्स भी नहीं फुलफिल कर पा रहे हो. तो जो फिलर्स हैं वो भी डालिए. इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, एग्जांपल्स, वो आपके पेज को फिल करेंगे. वो मिसिंग है थ्योरी के सारे आंसर्स में. Okay. अनदर थिंग कि लास्ट टाइम भी आपके जो कोड बेस्ड आंसर्स थे उसमें मुझे ऐसा लगा कि आपने 10 मार्कर्स को, ऑल्दो आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे हैं और एप्ट हैं, बट आप 10 मार्कर को 2 पेजेस में नहीं लिख रहे, आप एक पेज में लिख रहे हैं. लास्ट टाइम भी ये वाली प्रॉब्लम थी कि एक 10 मार्कर को आपने सिर्फ एक ही पेज में लिखा था. और एक और चीज, कोड बेस्ड क्वेश्चन जो आपका इस बार आपने लिखा है, ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम. इसमें आपको ऐसा करना चाहिए कि आप इस कोड को बहुत ज्यादा कंपार्टमेंटलाइज करो, इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो ताकि आपको ज्यादा कंटेंट मिले. जैसे आप बोल रहे हो कि आप कंटेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आपने ऑनेस्टी की बात करी पर आपने ऑनेस्टी टू वन सेल्फ की बात करी है सिर्फ. आप ऑनेस्टी टुवर्ड्स अदर्स की बात कर सकते हो, ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क कर सकते हो, ऑनेस्टी टुवर्ड्स व्हाट मिस्टेक्स यू डू. तो उस ऑनेस्टी को हर कंटेक्स्ट में आप तोड़ के एक दो पैराग्राफ्स जनरेट कर सकते हो, बट आपने उसको सिर्फ एक ही कंटेक्स्ट में लिखा. इस वजह से वो आंसर बहुत छोटा हो गया है. तो ट्राई टू deconstruct and try to think in different dimensions. Why it is the first chapter in the book of wisdom. तो इससे क्या होगा कि आप ज्यादा डायरेक्शन में सोचोगे तो यू विल बी एबल टू जनरेट मोर कंटेंट एंड यू विल बी एबल टू फिल द पेजेस with a very relevant content, which is one thing. Sorry, yes, please. Ma'am, can you give an example like extra another point like honesty to others means like Honesty towards the work you do, honesty towards the things you say, honesty towards in your professional life, honesty in your personal life, honesty हर dimension में honesty को सोचिए. Not Okay. being honest to oneself is one thing, ये सही था, but there is more to honesty than just being honest to oneself, and that will help you grow and progress, and that will be the first chapter of wisdom. Wisdom क्या होता है? Wisdom is the knowledge that you gain through experience, or if you will not gain the knowledge with experience if you're not honest. So it is important that you deconstruct the honesty in different dimensions to generate more content out of the knowledge that you have, which is appropriate. You have enough knowledge.
आपने कहा कि आपने मेंस लिखे हैं बहुत सारे, तो यू हैव इनफ नॉलेज, बट उस क्वेश्चन को डिकंस्ट्रक्ट जब आप करेंगे तब यू विल बी एबल टू जनरेट मोर एंड मोर ऑफ कंटेंट। तो ऑनेस्टी की आप डेफिनेशन के साथ भी स्टार्ट कर सकते थे, या विजडम को आप कैसे समझते हैं ये स्टार्ट कर सकते थे, और व्हाई ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम। इसके बाद सर मैंने इनका ये देखा था, केस स्टडी वाला क्वेश्चन देखा था, क्योंकि आपको अगेन आपने शुरू किया है फोर्थ क्वेश्चन, ए पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि एथिकल इश्यूज इन द केस स्टडी। लास्ट टाइम आपने केस स्टडी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, दिस टाइम दिस थिंग इज मिसिंग। आप छोटा सा इंट्रोडक्शन ये बोल सकते हैं कि आपको क्या समझ आया इस केस स्टडी में और क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व है। जैसे कि दिस केस स्टडी इज अबाउट issue of sexual harassment at workplace, but the perpetrator is someone who is very good at work. He had, because of him there are so many clients to the company and everything, but um, people are not taking action against him because it will be a financial loss. On the other hand, there is another co-worker Geetanjali, and she has been the victim of this person. तो आप कुछ भी छोटा सा, तो ethical issues involved like the dignity of the person, द प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, और ये सारे टर्म्स आप सिलेबस से बोरो कर सकते हो। तो ये जो इंट्रोडक्शन की जगह आपने खाली छोड़ी, उसमें आप एक पैराग्राफ छोटा सा लिख दो कि आपको क्या समझ आया इस बड़े से क्वेश्चन से। सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आल्सो इन डेवलपिंग द अनदर पार्ट ऑफ द आंसर। तो वो चीज आपको मिसिंग है, आप इंट्रोडक्शन लिखिए, जरूर लिखिए, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने स्टेक होल्डर के साथ एथिकल इश्यूज लिखे हैं जो कि अच्छे हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने यूज किए हैं। कोशिश करिए कि ज्यादा एथिकल वर्ड्स यूज करें, जैसे कि एटीट्यूड, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वर्क कल्चर आपने लिखा है, आपने जस्टिस लिखा है विच इज गुड, डिग्निटी आप यूज कर सकते हैं। जितनी एथिकल टर्मिनोलॉजीज आप यूज करेंगे उतना ही एथिक्स का पेपर लगेगा, ना कि अदर जीएस पेपर्स लगेंगे। उसके बाद ऑप्शन अवेलेबल भी आपने अच्छे से लिखा है, मेरिट्स और डीमेरिट्स, मुझे अच्छा लगा। बट इसमें भी थोड़ा सा और एथिकल टर्मिनोलॉजीज को यूज करिए, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, डिग्निटी, जस्टिस, ये सब ज्यादा से ज्यादा लाइए, एप्टीट्यूड, सॉरी, ऑब्जेक्टिविटी, और वर्क प्लेस, वर्क कल्चर, एनवायरनमेंट। उसके बाद आपने जब ये लिखा है कि आई अडॉप्ट ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद आपने लिखा है कि वार्निंग आप दोगे वरुण को, विच आई थिंक इज नॉट अप्रोप्रिएट। जब आप ऑप्शन 3 चूज करोगे तो आप सीधे इंक्वायरी करेंगे, आप पहले उनको वार्निंग देंगे, गिवन दैट उन्होंने ही हैज बीन हैबिचुअल एंड ही हैज बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। So I think you can edit this. You can straight away go with conducting an inquiry against this person. और उसके बाद जो आपने टाइम लिखी है वो अच्छी है कि there is no dearth of skilled people, and you can write that you will take short-term loss for some time. You might lose the clients, but you will take the short-term loss for the long-term goodwill of the company, for the long-term work culture of the company, for the long-term safety of women at the workplace, for the long term goals that you have in your mind. You will take the short term loss of losing some clients. आप ऐसा लिख सकते हो, instead of saying that you will warn, warning वाली stage, I think this in this case it has been passed. Okay. ओके, और उसके बाद आपने स्टेप्स भी अच्छे लिखे हैं, बट अगेन आपको थोड़ा सा लाइन ऑफ कंक्लूजन लिखना चाहिए कि वाई कुछ नारी शक्ति, कोई ग्रेटर थीम को लेकर आइए इस पे, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टू हैव मोर वुमेन एट वर्क प्लेस, द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, नारी शक्ति, और जीडीपी, या कुछ भी, या एथिकल टर्मिनोलॉजी लेकर आइए, जस्टिस, ताकि वो आपको आप ये लगे कि एक फ्लो में आपने आंसर को शुरू किया, आप बिगर थीम को भी एड्रेस कर रहे हो, छोटे थीम्स के बाद आप एक बिगर थीम को लेकर आ रहे हो अपनी कंक्लूजन में। So it is important that you write the introduction and conclusion. But the problem is mine already 20 Hmm. minutes I am getting over, ma'am. So I'm not able to adjust how to compensate the time. So you're saying कि आप टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं? Yes, ma'am. Already it is getting over. That is the problem I'm facing majorly देखिए because of इसके the लिए slow आप, handle. जी, आप थोड़ी प्रैक्टिस और करिए। आप एक आदत बना लीजिए कि जैसे ही मैं केस स्टडी पढ़ूंगा वैसे ही मैं 4 लाइन लिखूंगा कि मुझे इस क्वेश्चन से क्या क्या एथिकल, अपने सिलेबस से क्या क्या इश्यूज निकल रहे हैं, कि यहाँ पे कौन सा इशू आ रहा है, जस्टिस का इशू आ रहा है, यहाँ पे इंटीग्रिटी का इशू आ रहा है, यहाँ पे प्रोबिटी का इशू आ रहा है। वो 3-4 टर्म्स ही लिख दोगे आप 4-5 लाइन में, तो दैट इज गुड एंड वेल। अगर आप वो एक एक पैराग्राफ लिख पा रहे हो, मेक दिस अ हैबिट। मतलब शुरू में आई कैन अंडरस्टैंड कि नहीं हो पाता है, बट मेक दिस अ हैबिट कि द मोमेंट यू रीड यू राइट अ पैराग्राफ, द मोमेंट यू रीड एक एक दो चीज छूटेंगी, जैसे यहाँ पे आपने स्टेक होल्डर वाइज एथिकल इश्यूज लिखे हैं, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
आप छोड़ सकते थे स्टेक होल्डर वाइज बनाना, बट एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइक इंट्रोडक्शन के कॉस्ट पे आप ये मत करो। राइट Okay. इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप स्टेक होल्डर वाइज एथिकल इश्यूज जनरेट कर सकते हो अगर आपके पास उतना टाइम है, बट इंट्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। Sure, ma'am. Right. तो कुछ अननेसेसरी चीजों को आप कम कर सकते हो, और जो डिमांड है उसको पहले एड्रेस करिए। Otherwise, content wise, I think you are good and you have good examples and you have also knowledge. But थोड़ा सा और better structuring करिए, और better, if you're able to think in the terms of ethics, आप अपनी content में से अच्छे points निकाल के ला पाओगे। Okay, ma'am. So I think this is all I have to say about this paper. Yogesh, you can switch off the screen now. Sir, Pramod, can you listen to me? How many mains exam you have taken? Total 4 mains I have written, sir. This is 5th one. Okay, so you have written 4 mains. Huh? This is 5th one. Yes, sir. Okay, what was your ethics score in these 4 mains? Only first one I got 110. Later all 80s only, sir, mostly because I was 80s not only. able. See, as Aiman has told you that introduction and conclusion are very crucial, and you cannot miss those part at the you can you can miss other parts, but you cannot miss intro and conclusion. So that is very much important, and I think you have taken 4 mains exam, but still there is a lot of scope for improvement for your ethics only. I don't know about other GS subjects, but ethics, as we can see, after taking 4 mains exam, still you are not able to write intro and conclusion is a matter of concern, not only for you but for for us also, being as your mentor. So you have to work very hard upon all these things. ठीक है, सी आपको क्लियर है कि इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है, यू कैन रिड्यूस द कंटेंट ऑफ मेन बॉडी पार्ट नो। आप ऐसे ये आई वोंट से दैट इट इज अ lack of time management or lack of knowledge. It is a ignorance. It is an ignorance, I would say, and this is for everyone of you, everyone for all of you. अगर किसी ने 4 मेंस लिखा है and still he is not investing his time to write intro and conclusion is not a good thing. इतना एक्सपीरियंस तो आपको 4 मेंस लिखने के बाद में ही आ जाना चाहिए था कि मेरे को बॉडी कंटेंट कम कर देना है और इंट्रो और कंक्लूजन लिखना ही है। एग्जामिनर क्या देखेगा? If body is missing, more marks will go, right? If we are not able to write the body part, then marks will go more compared to writing intro and conclusion. नो यू, पहली बात तो आपको ये किसने कहा कि यू विल मिस द बॉडी पार्ट? मेन बॉडी कंटेंट का क्या है? इट इज अ रिलेटिव थिंग, आप उसको मिस नहीं कर रहे हैं, ओनली यू आर ट्रिमिंग इट डाउन। Because Yes. I'm not able to adjust the time because maybe I don't know, because of my regional language. I'm coming from regional language, or my speed of writing printing letters. Because of that, it is getting slow. I don't know exactly, but within the time, already I'm able to write. If within the 7 minutes, 1 page or little more than 1 page. More than that, it is not going. Whatever the way I am trying, because I have written almost all the from 2013 till 2021. I have written previous year questions almost all, but I have taken 10 minutes or 15 minutes and wrote those things. So as I can see, there are 2 problems. Not only the time management, there is a problem that you are not able to understand the priorities. You are not clearly putting the priorities at what they should be. See, obviously you have to write the main body content, without which answer is incomplete. But without the introduction and the conclusion, answer is still incomplete. You have to set your priorities, no? You have to reduce the word limit of main body content and put those effort and time into the writing the introduction and conclusion. Sir, can I add something here? Yes, please, Rajashree, go ahead. See, Pramod, the basic problem that is happening with you is that you are taking so much time not for writing, you are taking time for thinking, right? When you have to think and write that, then you take a lot of time to write answer. My suggestion to you will be that instead of focusing on the time right now you have 75 days almost, you focus on just writing the answer, writing a good answer with intro, body and conclusion without any time limit. Okay, even if you take 10-15 minutes for one answer, you focus on the quality and structure of your answer, and when you will keep practicing at least writing 5 answers a day,
then you will internalize it, and hence it will be very easy for you to not take time to write body and intro, body and conclusion, and then you can write the answers in time. It will be very helpful. Don't focus on time right now. Focus on your structure and content. Okay, ma'am. Means That is the best thing you can do right now, because intro and body, intro and conclusion have their respective weightage. Okay, if you write the best body, content part of all the answers, still you will not get marks as much as people writing intro and conclusions will get. And there is a very nice way in ethics to write the intro. Just write the definition of the value that is asked, even if it is integrity, impartiality. Just write the definition in your intro is done, and in conclusion you can write a simple conclusion, not very fancy. You can get all types of conclusions from toppers, copies, or any notes, or you can write some quote also. So that gives a very nice look to the answer. Also, your content is looking rich, right? If you have to talk about integrity in some answer, then it is very much expected that you write the definition of integrity, and that definition becomes your introduction. So you don't have to take many extra efforts to write intro. Okay, sure, ma'am. I'll try to do that. Okay, Pramod, we will see the improvement in your ethics paper from next time, and we will monitor it also. Okay.